Hello everyone, let's get started with the round of questions on behalf of the press. So we have Adya Jetli. Yes. Please, Adya, please tell us about your record. Good morning, everyone. I'm Adya Jetli from Delhi Public School. I'm receiving this award for being the youngest to achieve 22 certificates in art exhibitions. I would like to thank all my teachers for this award and my parents too. They have helped me a lot through this journey. And Okay, since how long you are preparing for this record? I've started doing these exhibitions since I was 5 years old, and then I've just continued going on and on. When did you find that you can make this record? I found out that I could make this record last year when I was just scrolling through the media and I came upon IBR. So I decided to tell my parents about it, and then we just told them about it. So what is the most memorable moment? My most memorable moment from the exhibitions is my first exhibition, in which it was all very new to me, so everyone was congratulating me for being the youngest, and it was just an amazing experience. So what's your future plans? In the future, I would like to pursue engineering. Both my parents are engineers, and as a hobby, I would like to keep art and singing. Thank you so much, Adya, Thank you. for giving us your time. You may take this. May I know your name and your record? Yes, I'm Janki Trivedi. My record is most people doing Sheri Garba together. Since how long you are doing that? Since 2011, this is record for the particular authentic flavor of Garba. Actually, nowadays you see Garba is remix of dancing and Garba. It is not authentication type of Garba. सो हमने ये रिकॉर्ड इसलिए बनाया कि हमारी गुजरात की जो ऑथेंटिक फ्लेवर है, जिसमें हमारा ऑथेंटिक गरबा जिसको बोलते हैं, जिसमें गाने वाले लोग ही गरबा खेलते हैं, तो वो रिकॉर्ड हमने बनाया है. तो इसमें आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको गरबा के? मेरी मदर से. हमारे घर में मैं जन्मी उससे पहले से ये ट्रेडिशन चल रहा था, लेकिन हम देख रहे थे कि पूरा गरबा कमर्शियलाइज हो गया और कमर्शियलाइज गरबा में बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड वो सारी चीज़ें रिमिक्स हो गई, हमारा गरबा चला गया. तो हमको ऐसा लगा कि हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमको ये रिकॉर्ड करना चाहिए. 2011 से हम शेरी गरबा कर रहे थे. फिर हमको ऐसा लगा कि इसको एक बेंचमार्क देने के लिए ये रिकॉर्ड करना चाहिए. अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं गरबा को लेकर? गरबा को लेकर हम ये करने वाले हैं कि हमारा रेगुलर जो गरबा चल रहा था वो हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे, उसको बढ़ा के वो पूरे गुजरात लेवल पर जाए, जिससे और इसको पहचान मिले. वैसे अभी तो ऐसा भी हुआ है कि यूएन ने भी गरबा को उसके हेरिटेज में रख दिया है, तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए, ये हमारा प्लानिंग है. Thank you so much for giving us your time, and we wish you all the very best for your future. Thank you very much. Can you please tell me your name and your record? My name is Devan Singhal. So what is your record? Ma'am, I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh, and I am extremely delighted to be here. And I am thankful to India Book of Records and Asia Book of Records who gave me this opportunity and invite me for this convocation. I have been awarded for solving 12 sides color Gigamix Rubik's Cube in 30 minutes and 5 seconds. Also, I am the fastest and the youngest child to achieve this award. I like to dedicate this award to my mother. Thank you. Thank you so much for giving us your time. Okay? You may take this. Can you please tell your name and your record? Her name is Kenza Meher. Her record is identifying multiple items. So what is her record? Identifying multiple items, cognitive skills. So since how long she is preparing? She is not preparing. We find that when she starts to speak, we find that most of her words in English. She gradually learned the names of colors, fruits, vegetables, domestic animals, wild animals, body parts, all in English at the age of 3 by herself, not taught by me, by herself. Did you face any challenge?
Yes, when in our state Kerala, it's not a big content. All humans are not bothered about this India Book of Records. When I received this records, even it is not a big content in our state. It's a challenge. So what's your future plans for her? Definitely, our future goal is Asia Book of Records. Any message you want to give to viewers? The message I want to give productive reasons to start their future as a learning. That's all. Thank you so much. Thank you so much for giving. देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस संस्था ने आयोजित किया है, विश्वरूप राय चौधरी जी ने जो इस सम्मान का आयोजन किया है, इसमें तो मीडिया के साथियों के द्वारा उन लोगों को, जिन लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिनको हम सम्मानित करने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक विश्व में नाम करें, और इसके लिए जो भी संस्था इस प्रकार का आयोजन करेगी, इस तरह के रिकॉर्ड के साथियों को सम्मानित करेगी, रिकॉर्ड बनाने वालों का सम्मान करेगी, तो मुझे लगता है कि हम सब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए यह सम्मान का विषय है। यह संस्था प्रत्येक क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों को सम्मानित करती है। तो ऐसे सम्मान के लिए हम आप मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देते हैं कि इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप आज जिन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है उनको हमने आह्वान भी किया है कि अपने ही रिकॉर्ड को और तोड़ने का प्रयास करिए, जिससे जीवन में लक्ष्य की ओर अनवरत चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय मयूख जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2025 एनुअल इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन में एज ए चीफ गेस्ट आना स्वीकार किया। और अभी हमारे रिकॉर्ड होल्डर से भी सर मिले, इंटरनेशनल गेस्ट से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सर के प्रेजेंस की वजह से और बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स आपके माध्यम से इसके बाद भी जब आप ये वीडियोस ये जाएगा तो प्रेरित होंगे और नए चैलेंजेस, नए रिकॉर्ड्स वो कायम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जीवन में लगातार, जैसे अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया भी, कि लगातार रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और यही जो प्रेरणा का आपने आज कुछ पंक्तियाँ बताई, उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आपका धन्यवाद कि आप आए। और एक साथ में किताब का सर ने आज रिलीज किया 2025, ये 20वां एनिवर्सरी एडिशन है, यानी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2006 में पहला एडिशन निकाला था। आज 20th एनिवर्सरी यानी कि 20वां एडिशन, सर के हाथों से इसका विमोचन थोड़ी देर पहले ही हुआ हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स के बीच। और ये उसका एक सिंबॉलिक लॉन्च आप सबके सामने ये हो रहा है। इसमें सर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 इस एडिशन में। मतलब भारत के 10,000 रिकॉर्ड होल्डर्स के नाम इसके अंदर हैं, जिन्होंने पिछले एक साल में रिकॉर्ड तोड़ा है या नया रिकॉर्ड कायम किया है। सो धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। धन्यवाद। संजय जी, तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, तमाम जो लोग आए हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है डॉक्टर BRC के यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे, कितना बदलाव देखा जाएगा ऐसे अगर रिकॉर्ड तोड़ते हैं बच्चे और तमाम का जो यूथ है? नहीं, हम तो भारत देश के निवासी हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, तो हम तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। तो हम तो बच्चों को या बड़े जिनको भी यह सम्मान मिला है उनको हमने आग्रह किया है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है, चरे वेती अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Can you please share your name and your record? Well, I'm Sonakshi Sanyal and I'm 13 years old and my record was to make the most hand mudras in 1 minute.
It goes like this: a deer in one hand and a 2 in the other, and then you switch it. Since how long you are preparing for this? I've been ambidextrous since I was small, so I knew I could do these different records. And one day I was like, why didn't I apply for India Book of Records? And then we did, and then I practiced for like 2-3 months, and I reached till 190 times per minute in this brain exercise, and I got the record. From where did you get the inspiration to do this? Well, I used to watch videos when I was small about these brain exercises, and I tried to practice them, and then I could do them, and then I thought that's what the inspiration was. So what's your future plan? With this record, I guess to put it on my report card or stuff. Any message you want to give to other viewers? Well, keep practicing your record, and I feel everybody has some unique talent in them, so that everybody will be able to make a record. So yeah. Thank you so much. Thank you so much for giving us your time. You may take your seat. Thank you. Thank you. Can you please tell us your name and your record? Yes, ma'am. My name is Vaibhav Vijay Thorat. I am from Pune, Maharashtra, and I have done record in rope skipping in 5 minutes. I have done the maximum rope skips 888 in 5 minutes. So when did you started doing this? Ma'am, I started doing rope skipping from 2016, and from that time I am doing it daily, 2000 rope skips in 12 minutes. So what mental process or technique you used? Ma'am, rope skipping is a simple exercise which everyone can practice in a small area and with a small equipment like just a single rope, and it is a most easy exercise that everyone could do to keep our body fit. So did you face any challenge, any hurdle to make this record? Yes, ma'am. In the initial phase, I used to do only 10, 20, then 30. Then I practice every day, and for past 8 to 9 years, I'm practicing it daily, 2000 skips. So one day I saw on YouTube the India Book of Record video. So I thought that I can also make it, and I applied for it. Any plans to make more such records? Yes, ma'am. When my 888 record was made in 5 minutes, soon in next 2 months I broke my own record, and I made it 909 means 909 rope skips that I will apply in next month for Asia Book of Record. Any message you want to give to viewers? Yes, ma'am. I am a MBBS final year student, so I have seen many youngsters facing the problems like obesity in hospital. So I would like to just tell that today everyone is not doing physical activity which is required, and in youngster they are going for gym and taking other supplements. Like they should not take that. They can do regular basic yoga or like this rope skipping, which is less time taking, and it can give much more benefits. It is it is very good for cardiorespiratory system, as it helps in keeping the person fit. And ma'am, for this I have called my mother here because she is my source of motivation. She taught me rope skipping in 2016, and from that I have came till this stage. So I am very thankful to my mother and father. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Thank you, ma'am. Can you please share your name and your record? My name is Arsalan Ali Hassan. I have performed 70 leg raise push-ups in just a time of 30 seconds. Since how long you are preparing this leg push-up? I was 10 to 11 years old, and I used to do push-ups in the room secretly. Nobody knew about it. And once I thought I have to break one record, and I applied for the India Book of Records for this. So when did you find that you can make this record? When I was doing alone, I did 50 push-ups in a very short time. So I thought I can break some record or something. How do you feel now that you have achieved this record? I feel great because the record is like it is very amazing, because very unique, you can say, because I was only a kid and I did done this record. Any advice or message you can give to our viewers? For the future generation, I think they have to just work hard and focus, not focus on the distractions, and prepare yourself. Thank you so much. Thank you so much for giving us the time. Can you please share his name and his record? Yes. He is Pranav Datta, G. Pranav Datta from Tamil Nadu.
He achieved 2 India Book of Records, one for fastest kid to answer 100 Tamil questions on epic Ramayana and another maximum general knowledge questions answered on about states of India. So how did you prepare him to learn this kind of? Since 6 months we started showing him flashcards which enhances its memory a lot. He understands and recalls the things in a very quick manners, and I started narrating stories to him. He understands it very well, and instead of short stories, then I started narrating story of epic Ramayana. He was very interested and he was attached to the characters very well. Then with that same motivations, we then applied for the record, ma'am. With that motivation, I used to ask him questions regularly, ma'am, about the topics of Ramayana and the characters. With that motivation, he achieved it, ma'am. Any challenges you find? No, ma'am. Not like that. So any message you want to give to them? Every child is unique. If we nurture him in a good environment and support, everyone can achieve the records, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, madam. Thanks. Thank you for India Book of Records for honoring him. You may take your seat now. I am Pranavdata from Tamil Nadu. I am one letter. I face of India. And face of India. Ramayana and the India Book of Letters. Thank you. Thank you. Can you please share your name and your record? Okay, I'm Vijayanathan, known as Jay, a music director from Malaysia. So I've created a band, consists of small kids, okay, around 11 to 15 years old kids band. From where did you get this inspiration? Actually, I'm running a online music school in Malaysia. So with a very minimal cost. So once these people, these kids are, they reach a point upon completion their course. So what we do, we handpick them and create a band. Okay. So I don't want them to just learn and go. So I want them to pursue something in music. So that's the reason that I created this band. Any memorable moment of your record? Yeah, recently about a week ago, a few days ago, Maestro Ilayaraja has came to Malaysia, and these kids were performing in front of him. Then Maestro Ilayaraja has these ideas of creating an orchestra using these kids, and this is, I think, it is the most memorable, remarkable day in our life. Did you face any challenges or any hurdle during this record? Yes, of course I do. Because it's just a beginning. It's just a what do you call? I've just started, and believe. No one believes that I can do it with children. They say children only can sing, but they can't form a band. It's very impossible to do it. But I think we have showed people that we can do it. Any message you want to give to our viewers? So in JOM, our school, JOM, Jay's Online Music, what I would like to say is, we are not only teaching children, we are building their dreams. So I think that's all. Thank you so much for Thank taking you. us time. You may take this. Thank you. नमस्कार सर, थैंक यू सर। आप अपना नाम और अपने मुझे बारे में कम बताइए। सुनता है, नजदीक से वो ये बोले कम सुनता है, थोड़ा तेज बोल रहा है या नजदीक से बोल दीजिए आप। हाँ सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए सर, अपना नाम और अपने बारे रिकॉर्ड में। सर मेरा नाम साधुराम शर्मा है, एज मेरी 93 इयर्स है और हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और बचपन से ही अपने 14 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद शिक्षा भी अपने आज़ादी से पहले लाहौर यूनिवर्सिटी से पास किया था। फिर अपने 80 साल की उम्र में डिप्लोमा इन उर्दू पास किया। इसके बाद पंजाब हरियाणा सरकार के 38 साल सर्विस की और उसके बाद मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ। हरियाणा सरकार ने मुझे 2018 में
आजीवन वरिष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया और 2019 में राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ सम्मान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो आपका आशीर्वाद। जी शुक्रिया शुक्रिया। और मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों को देता हूँ। लगाए हुए Can you please share your name and your record? सोहम मेरा। So what is your record? আমরা কাকদ্বীপ জেলায় সুন্দরবন থেকে কাকদ্বীপে এসেছি। রেকর্ডে কি করেছিস? ইন্ডিয়া মিউজিয়াম। কি করেছিস? কার্টুনের ছবি ক্যারেক্টার। ওটা 8 পেপারের উপরে 55 ক্যারেক্টার লিখেছিল, যার জন্য পেয়েছে। এবছর বঙ্গবন্ধু সম্মানও পেয়েছে, ট্যালেন্ট অফ দ্য ইয়ার পেয়েছে বেঙ্গলে। আর ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে একটা বছর ছবি এঁকেছিল, যেটা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে শো হয়ে আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রাইজ পেয়েছিল। ও 3 বছর বয়স পর্যন্ত, মানে বিভিন্ন কথা বলতে পারতাম, 10 বছর বয়স পর্যন্ত ছবি আঁকা প্রভাবিত শুরু করতাম। Any message you can give to our viewers, Hindi or English? हिंदी। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? ये तो सुबह एकदम जब छोटा था तो बात नहीं कर सकते थे, 10 साल तक। तो उसका टीचर है, 3 साल से आंका सिखाया उसने। इनके रिकॉर्ड के बारे में हिंदी में बता सकते हैं? हम लोग बहुत प्राउड है, तो सोच नहीं सकते थे क्या ये रिकॉर्ड जीतेगा। छोटा छोटा जब था वो ऐसा ही था, कुछ बात नहीं कर सकते थे। ऑडिजिन का प्रेजेंट था। We wish all the best to him and please thank you so much. Please come on this. Please take your seat now. Can you please share your name and your record? Hi, I'm Ankita Joshi. I'm the first woman in the world who painted in zero gravity with the training of NASA. So I had 2 trainers who are the aerospace astronaut trainers who trained me for around 8 months, and then I recorded 6 paintings in zero gravity. So I have seen your record. So why Chulbul Pandey you have selected? Salman Khan as a Chulbul Pandey. Yeah, it's my favorite actor. Okay. So that's the reason, of course, and I wanted to award him the gift. So from where did you get the inspiration to make this record? So it's a concept of zero, which is shunya of our Indian origin, the state of mind. So when I was working on a project called Nalism, so that's when I was creating a storyline on what to do about it, and zero being incepted in our culture. So I took that as a subject and created a project on physics and metaphysics that I combined into 6 paintings. So how did you prepare yourself for zero gravity? Yeah, I was trained by NASA, so it was a very, very strict food schedule, physical fitness, mental fitness and all that for 8 months. There were sessions where we had to do some mathematical calculation underwater, so under pressure and all that. So they check your state of mind for doing that, if you're ready to go up and do whatever your record holds. So did you face any challenges or hurdle and how did you overcome? Oh yes, we had an emergency landing which costed us approximately 22 lakhs to come down and then prepare myself again to go up. So that was a very big challenge. I don't think so I'll be doing it again. Any message you want to give to everyone? Oh yes, I think thoughts and inspiration comes naturally, and I think everybody should look forward of doing what you want to do and be brave about it. Thank you so much for sharing your record. Thank you so much. Can you please share your name and your record? I'm K. Vishwanathan from New Delhi. So can you please share few words about your record? Yeah. See, the thing is, I used to take part in I got the most decoration car awards in the world 13 times continuously. So I took part in the car rally organized by the Women's Era magazine in the year 2008. And since then, I've been winning continuously for 13 times. In the year 2018, it is about the theme. Year after year, I used to decorate the car by various themes. Started from Incredible India. So the last one was Swachh Bharat, because Sabka Saath, Sabka Prayas, Sabka Vikas, or Sabka Vishwas. So from where did you get the inspiration to decorate the car? No, the thing is, I was very much interested for decoration and other things.
I got an opportunity. I saw the advertisement in the newspaper, and I thought just let me just take part in the event. So since then, I've been continued. 2008, I took part in it, and I won the best decorated car award. And continuously for 13 times, I won this award. Any And plans? it has been recognized all over the world. Right. Any And I plans? am also the Limca Book of Record holder 7 times. And of course, India Book of Record, Asia Book of Records. Alright. So any plans to make more such records? Pardon? Any plans to make more such records? Yes, definitely, because 2019 onwards, due to Corona, the organization is not organizing the events. But I hope so. I will take part in it. And I retired from the Government of India as a class 1 officer. Now I'm retired. This is a 63-year-old person. So any message you want to give to our viewers? Yes, I want each and everybody took the initiative and look forward for India 2047 Viksit Bharat. And I definitely hope we will achieve it without any problem. And each one will contribute. Thank you so much. Thank you for so giving much. your Thank you time. very much. Can you please share his name and his record? He is Sai Riyash. He is record 100 meters running in 40 seconds. He had 2.5 years. So since how long you are preparing him for this? Few days. He is naturally running. Okay. So how do you feel now as a proud parent of such a young prodigy? Yes, we will very glad of him. So what's your future plan for him? We preparing in Olympics. Okay. Any message you want to give to viewers? No, children are gift of God. Please grow him in naturally. Thank you so much. Thank you so much for giving us time. Can you please share your name and your record? I'm from Kerala. I achieved this longest duration to play double para diddle on the drums. So since how long you are preparing for drums? For 6 months. He's playing drums for since 2 years. He was born with a rubber fingers and surgically separated, but he hold his drumstick with one finger like this. Double para diddle is right, left, right, left, right, right, left, right, left, right, left, left. This is the double para diddle beats. So what's your future plan now? I have said double para animation set. You want to become a musician. You want to become a musician. Very nice. Okay. So we wish all the best, right? So please, you may take your seat now. Thank you for sharing your time. Thank you. आप भी खड़े हो जाइए सर, कोई इशू नहीं। Can you please share your name and your record? My name is Aryan Raj, and my record was to be the fastest child to recall computer shortcut keys alphabetically. Since how long you are preparing for this? How long you have prepared? 2-3 months. 2-3 months. 2-3 months. Okay. So from where did you get the inspiration to achieve this record? It was for my love of computers. So did And you I face- fo- Okay, please. And I found computer shortcut keys fascinating. It makes working on a computer faster and easier. So did you face any challenge? Any difficulty, any problem while performing this record? No. No. Okay. So what is your future plan? I want to achieve more records. You want to achieve this record. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. You may take your seat. आइए आइए बेटा आइए। He was to speak something about his journey. His journey. Please. Tell about that. Only that line. Tell. Which one? बोलो ना, about the hard working and all this. Tell.
He taught me that with hard work, dedication, determination, and belief in yourself, you can do anything. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for giving. Thank you. सर अपने नाम और अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं। मैं आनंद प्रकाश शर्मा और मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1000 कविताएं लिखने के लिए और उसका एडिशन एक साथ निकालने के लिए है। ये 1000 कविताओं का उत्सव का जो जश्न बनाया गया है उसे आप लोगों ने यहाँ अभी मेरा उत्साह दुगना कर दिया है, क्योंकि प्रेस के समक्ष रिकॉर्ड बहुत अहमियत रखते हैं और मैं गौरवान्वित महसूस करते हुए इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है और ये अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है इस कार्य से। 1000 कविताओं के उत्सव के लिए मिला। थैंक यू। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली ये किताब? हाँ, मैं बहुत छोटी उम्र से ही कविताएं लिख रहा हूँ और इस समय आपको बता दूं कि 3000 से ऊपर कविताएं मैं हिंदी में लिख चुका हूँ। बहुत सारी पुस्तकें मेरी इस दिशा में प्रकाशित हुई हैं और इस समय चर्चित कृतियाँ भी रही हैं। वो मसलन जैसे चेतुआ नाम की एक पुस्तक है जो बहुत लोकप्रिय है, अभी खंडित दुनिया आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से कविताओं का और अन्य उपन्यास लिखने का मेरा बचपन से एक शौक रहा है और सभी मानवीय प्रेरणाएं मेरी इसमें, आप सब मानवीय प्रेरणाएं मेरे लिए प्रेरित करती हैं कि हम एक सहचर्य व्यक्तित्व हैं, आप और हम मिलके इस दुनिया को बनाते हैं और यही कविता का एक खूबसूरत भाव होता है। उससे मैं आप सबके साथ मिलके द्रुगित कर लेता हूँ और फिर शब्दों में लिख देता हूँ। वो दर्द होते और एक पीड़ा होती है मगर उससे बड़ा आनंद होता है। थैंक यू सो मच सर अपने अपना रिकॉर्ड शेयर करने के लिए। और बस एक लास्ट ये बताइए कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लिखना कम हो गया है और पढ़ना भी कम हो गया है, जबकि अब देखना ज़्यादा हो गया है। और जैसा आप लोग मीडिया है तो देखना दिखाना बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, मगर लिखना ना छोड़े लोग। हमारा कविताएं लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम खुशी में बहुत एक साथ हो जाते हैं, जी लेते हैं, मगर जब दुख होता है तो हम लोग अपनी हिम्मतें तोड़ देते हैं। मैं खुद भी अभी एक गंभीर बीमारी से उभर के आया हूँ अभी इस कार्यक्रम के पहले। तो ये प्रेरणा होती है कि हम लोग लिखें और उसे पढ़ें और फिर उसे जिएं और जीते हुए लिखें भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Can you please share something about your child's record? I am a father, Kalpesh Shashikant Patel, and my child, and I'm his coach too, Vyom Kalpesh Patel. Proudly to say that he had created Asia record, first he created India record, the fastest kid. Then he got an award of Asia record Grand Master for fastest kid to run 400 km in 2.29 seconds. And it was a very good journey for us. So since how long you were preparing? We were preparing for last 6 months, and it was a very tough time because in the Mumbai weather is so hit up over there, and targeting that particular climate and beating the record. And for 6 months he was been trained over there. Pace training was been done. I had up some standard track over there. Spice shoes comfortable to be done to be how can he can run over there. So we had planned more than 6 months in this field over here. So what's your future plans for him? Future plans are this about the child is he can keep on keeping records over there, and he can be motivate his kind of age kids to get some more records. That record can be more tougher. It's more enjoyable to chase it. So I still, if your plan is that we'll go for more records, attempt his best in each and every work what he do. Any message you want to give to viewers? I can say to viewers, please. I first of all thanks to his mom, his grandfather and grandmother, because I am a very rude person for him. I need to shout. They are the one who motivate them. Papa आवाज छे, तारू भलू करे छे. Thank both of the mom and dad and his grandfather and grandmother. Second, thanks to his school to giving a motivation in sports. The sports motivate can be come for the father, but the push is from the school also required. So I request all the schools to be at least motivate pre-primary for interest in sports, same what his school has been done, and can be continued for more over there. But that age can motivate them. कहते हैं ना कि बच्चे के हाथ में मेडल रहेगा, इसके हाथ में क्या मुझे कब मिलेगा, वो बचपन में ही आएगा. Thank you so much.
Thank you so much for giving your time. Thank you. We wish all the best for this future. Thank you. नमस्कार सर, आप अपना नाम और अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं। मेरा नाम राजेश पटेल, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर संस्कारधानी से आया हूँ और मैं तुलसीकृत श्री रामचरित मानस का अखंड 7 पाठ एक बार में बैठ कर के रामचरित मानस का पूरा गान करता हूँ, जिसमें कि ना कोई जल, कोई पानी, कोई सारी बिना क्रिया किए हुए 19 घंटे में रामचरित मानस का पाठ करता हूँ। तो आपको इस चीज़ के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? इस चीज़ के लिए मुझे मेरी माता श्री से प्रेरणा मिली है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, और उनके बदलाए हुए रास्ते में चला तो आज मुझे यहाँ इंडिया बुक रिकॉर्ड में मुझे आज यहाँ मीडिया के सामने और इस दिल्ली की राजधानी जो कि मुझे यहाँ आज स्वागत के लिए बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत इस मीडिया का और इस इंडिया बुक रिकॉर्ड का सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं मैसेज मेरा तो यही है कि आज जो हमारा सनातन जो नीचे की ओर जा रहा है, हमारे ये 25 से 50 वर्ष के बीच में जो हमारे एजेड के लोग हैं, इनकी वजह से आज हमारा, क्योंकि हम धर्म में ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पीछे कैसे ध्यान देंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अगर आज नहीं ध्यान देंगे तो हमारे पीछे ध्यान नहीं देंगे, और जब पीछे नहीं देंगे तो हमारा सनातन समाप्त होने की कगार में ले जाएंगे लोग। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। Can you please tell your name and your record? My name is Tashvi Jagmel. My record is longest time duration on the partner's hand in split position. Okay. So since how long you are preparing yourself for this record? Last 6 months. Last 6 months. So what is your future plans? I want to make Asia Book of Record. That's great. So any message you want to give to other children of your age? आप कुछ और मैसेज देना चाहते हैं अपने एज ग्रुप के बच्चों को? कुछ और बताना चाहते हैं आप? सर आप आप संदेश दीजिए, बता दीजिए, हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं। आप बता सकते हैं इनके बारे में। कोई नहीं, ये वैसे डेडिकेटेड है अपने काम को। जब भी मैं ड्यूटी से आता हूँ तो ये क्या करती है कि मेरे को चाय तक भी पीने नहीं देती है, और मेरे को ना वहाँ छोड़ के आओ, एकेडमी छोड़ के आओ मेरे को उसके लिए। तो ये हर चीज़ में अपने घर में भी अगर रहती है तो अपने पैरों से ना चल के कोई काम भेजते हैं तो इस पोजीशन में जाते हैं अपने हाथों में, यानी कि तो पूरे टाइम में पूरे डेडिकेशन से। और रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? ये अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। हाँ जी। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई करें। धन्यवाद आपका कीमती समय। थैंक यू IBM। आप अपना नाम और अपना रिकॉर्ड प्लीज शेयर कीजिए। I Dr. Surya Narayan Maiti, retired principal of a higher secondary institution, West Bengal government sponsored in West Bengal. So from where did you get the inspiration to make this record? During my early journey in teaching job in the year 1987, I considered this job as a penance of my life. During my entire journey, I have tried to dedicate myself for the enhancement of education as per my capability, as per my knowledge and belief. So how do you feel now that you have achieved this record? I still now, during this, I feel still now I am a learner and also trying to improve myself as a teacher. Because teaching is an endless job. In spite of my superannuation, I
did not stop the teaching of students. So far as I have been trying to teach the present generation of students as a non-institutional teacher. Any message you want to give to other viewers, other teachers? To the new generation of institutional teachers, I would like to say that they should not try to motivate the students to be a income generating machine. They should try to encourage the students, to motivate the students, to guide their students to be a real human being. Thank you so much for giving us your time, and we wish you all the best for your future. Thanks a lot. My regards to all concerned of India Book of Records. Pleasure is ours. प्लीज अपने बच्चे का नाम और रिकॉर्ड बताइए। माइक में बोलो। बोलो। सर वो गिर देगी नीचे। आप नाम बताइए ना सर प्लीज। आप नाम बताइए ना सर बच्चे का। आप बता दीजिए। आप ध्रुवी से मंडली। इनका रिकॉर्ड बता। मेरे को तो बताओ। मेरा नाम अजय मंडलोई है। मेरी बच्ची ध्रुवी सिंह मंडलोई, जिन्होंने वर्ल्ड की कैपिटल बोली और 3 ईयर 5 मंथ की एज है और हम खरगोन ज़िले MP से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट खरगोन है। आपको कैसा लग रहा है ये रिकॉर्डिंग को मिला है? ये अभी बच्ची स्कूल नहीं जाती मेरी, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ पे मेरी बच्ची की वजह से खड़ा हूँ और रिकॉर्ड बनाया मेरी बच्ची ने, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, एक मोटिवेशन भी मिलता है। Thank you so much. Thank you so much for giving us. Please tell your children's name, child name, and a record. Hello everyone. I'm Taruna, mother of Kashmi. She has got record in solving 100-piece puzzle, jigsaw puzzle in 15 minutes time. So her greatest inspirer would be her brother. He is also India Book of Records holder. And I would like to take this opportunity to thank my parents present here for their invaluable support. And this is just not a recognition for their achievements. It also reminds us that this is your dreams are within. You have to give wings to your dreams. So I would like to congratulate all the other record holders. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Thank you. Please share your name and your record. मेरा नाम रमला बीवी हूँ। मैं केरल से आई हूँ। मेरा स्कूल पालक्काड ज़िले में पुदुनगरम मुस्लिम हाई स्कूल में काम करती हूँ। मेरे स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय लहरी विरुद्ध दिन के जुलाई 4 में हमारे स्कूल में लॉन्ग कॉन्टेंट बैनर प्रदर्शन किया। 1220 मीटर की कॉटन बैनर प्रदर्शन किया। 30,000 व्यक्तियों में शामिल हुआ और 2,000 व्यक्तियों की ह्यूमन चेन बनाया। 2,000 व्यक्तियों की हस्ताक्षर मांगा। इसलिए हमको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड्स मिला। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप व्यूअर्स को? संदेश डायरेक्ट। अब हमारे स्कूल के समूह में बहुत अधिक लोग लहरी उपयोग करता हूँ। इसके पूर्ण
तरह उसके छुटाने के लिए मैं बैनर प्रदर्शन किया। उसमें लहरी के बारे में चित्र खींचा और संदेश बहुत अधिक लिखा है। Thank you so much for giving your time. Can you please share his name and his record? Baske Advait Raj. He is 4 years, 6 months old. He knows, I recall it, 195 countries and capitals. Their capitals, identifying 195 countries' flags, and memorizing 118 chemistry periodic elements in short period. And India states and capitals and Telangana districts names and all. Very happy to be here. And also he got Telugu Book of Record, Government of AP and Telangana. He got Telugu Book of Record also. Thank you so much for sharing. Thank you. Please share your name and your record. My name is Pawan Bansal. I am from Delhi. So what is your record? I have walked 49,55,401 steps in one year. From where did you get the inspiration to do this? I have seen so many people walking. So how did you prepare yourself for this? I'm keep on walking. Keep on. So did you face any challenge? No. Any future plans? Right now there is no plan. Any advice you want to give to viewers? One should walk daily. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Please share your name and your record. My name is Nipu Barua. Assamese language has gained the status of classical language, but has not been included in a Unicode. And people from Northeast are looked down upon in the other parts of India. Therefore, as a youth of new generation, I have been trying an exceptional way to establish the Assamese language and history and culture of the Sutia community, one of the most indigenous tribe from northeastern region of India. So I was able to set a world record and Asian record by writing and world's smallest poetry book named by Jibanor Rong, recently edited the ethnic research related journal Yoi Malini, which entered the Asia Book of Records as a magazine with the most research related article published. Okay. How do you feel now that you have achieved this record? मुझे अच्छा लगा है. Thank you so much. हाँ, thank you. Thank you so much for giving your time. Okay. Thank you. Can you please share your name and My your name- record? My name is Jeevani. I'm from Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This is my 4th record. Previously, I did India Book of Records. I achieved India Book of Records 2011 and 18 also. This is my 3rd record in India Book of Records. I depict Sundarkanda pictorial Sundarkanda. I want to explain just little bit. Okay. मैं हिंदी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया. श्री हनुमान गुरुदेव मेरे मन बोले सीता राम कथा. श्री हनुमान अंजनी सुत है, अति बलशाली राम भक्त है, लंका जाकर आने धीर है, महिमोपेत शत्रु भयंकर, जाम्बवतादि वीरों के प्रेरेपित से संपत्ति किए, जो लंकेश्वर ने अपहरण किए जानकी माता को खोजने, अपने पिता वायुदेव को, सूर्य चंद्र ब्रह्मादि देवों को, वानरेंद्र ने महेंद्र गिर पर वंदन किया पूरब मुख से, राम नाम से परवश हुआ, तन्मन से पुलकित हुआ, देह बढ़ाया आगे निकला, दक्षिण दिशा और लंका जाने, पवन तनय की पदगट्टन से पर्वतराज ने भयभीत हुए, फल पुष्पे नीचे गिर पड़े, सुगंध खुशबू से तिरसिकरे भरे, टूटे पत्थरों का धातु निकले, चारों ओर उजाला फैलाए. ओके, ऐसा सब लिखा पूरा सुंदरकांडा पिक्चोरियल आर्ट. Thank you so much for giving your time. Thank you. Please share his name and his record. He is Ishan Bishas. He is 3 years and 3 months old. Ishan translating 215 English words into Bengali in 4 minutes and 52 seconds. And recorded in India Book of Records. Ishan has also made displays in Asia Book of Records
Since how long you are preparing him? At the age of 2 years, he has shown great interest in reading books. Even at the 12 o'clock at night, he wants to read a book. And if we did not read book, he starts crying. Then I collecting words little by little and apply to the India Book of Records. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. May I take this? Thank you. Can you please share your name and your record? My name is Mukta Jain and I am a record holder for composing all 18 chapters of Bhagavad Gita in English poetry. From where did you get the inspiration to do this kind of work? I did not prepare myself for this. Actually, I am on a bigger endeavor. I am on an endeavor of writing 365 poems in 365 days dedicated to my late father. I started this endeavor on his 29th death anniversary, that is 15 September. During this course of time, Kartik month fell. It was an inception of Kartik month. Then I thought of writing Bhagavad Gita and all 18 chapters in 18 days from 20th October to 6th November. They are all uploaded on my YouTube channel. Any challenges, any hurdles you faced during this? There were times when words flow endlessly and there are times when you fall short of words. But when you are passionate about something, you do get a way out. Any message you want to give to us? Bhagavad Gita has timeless wisdom. We have translations, we have cartoon stories, and I also want poem lovers to get inspired from the timeless wisdom of Bhagavad Gita. Thank you so much. Thank so you. much for giving us your time. Thank you. आप अपने नाम और अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं. I am T.T. Jacob from Cochin, Ernakulam. I have been writing my personal diary in Pitman shorthand for the past 57 years. No one in the world has written a diary in Pitman shorthand for such a long period. Even Sir Isaac Pitman, who invented shorthand, has not written his diary for such a long period. In order to promote the writing of diary among children, I have been distributing diaries free of cost to the school children of Cochin area. This year, I have distributed 1,200 diaries. Around 2 lakhs rupees I have spent. And my aim is to foster the writing skills of the school children so that they will be able to perform very well in their examination. Any plans to make more such records? Excuse me? आपके कोई और plans हैं इस तरीके से और रिकॉर्ड बनाने? Not able to hear properly. आपके और plans हैं कुछ और इस तरीके के रिकॉर्ड और future plans हैं? Your future plans? Plan? Yes, your future plans. Now my plan is that now I am writing diary, I will continue it and I will distribute diaries to the children. Every year I am doing it. For the past 7 years I am doing it. Hereafter also I will do like that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Can you please share your name and your record? Okay. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself to you. I am Sheetal Shetty from Bangalore. I am in 3rd grade studying at NIPS. My name has been recorded in India Book of Records on March 25, 2022 for reciting the names of 195 country names along with the capitals. I was supported and encouraged by my parents, principal ma'am and teachers. Today I am very happy to stand before you all as a record holder and to receive the award. I thank the organizers for this wonderful opportunity. This will motivate me to achieve more. I feel happy to be present on this convocation and this is a moment I would like to cherish forever. Now let me recite you the country names along with the capitals. Afghanistan, Kabul. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Giving your time.
Can you please share your name and your record? My name is Shruti Rawat. So can you please share few words about your record? मेरा 10,000 किलोमीटर साइकिलिंग का रिकॉर्ड है और मैं यंगेस्ट इंडियन हूँ जिसने नेपाल का एक हाईएस्ट पीक है उसको साइकिल से कवर किया है। और मेरे जो साइकिलिंग का मोटिव था वो इन्वायरमेंट के लिए लोगों को अवेयर करना, साथ में वुमेन एम्पावरमेंट का एक मैसेज देना, ये था। So from where did you get the inspiration to do this? मैं जहाँ से आती हूँ माउंटेन से, तो अभी हम लोगों को क्या एक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे माउंटेन्स को होता है क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो वर्ल्ड के मतलब हमारे पास पीने लायक जो पानी है वो पूरे पानी का सिर्फ 2% है और वो कहाँ रिजर्व है, हमारे हिमालयाज़ में। तो हमको उन्हें बचाना है, वही मेरी इंस्पिरेशन है क्योंकि वो मेरा घर है। तो इस पूरी जर्नी में आपका कुछ एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट रहा हो जिसमें जो आपको याद हो? ऐसे बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं और ये मेरी 90 डेज़ की एक सिंगल स्ट्रेच यात्रा थी, एक्सपीडिशन था। तो एक मेमोरेबल अगर मैं बताऊं तो ये वैसे तो ये पूरी जो यात्रा है वो बहुत मेमोरेबल रही है, लेकिन नेपाल, क्योंकि जब हम माउंटेन्स में होते हैं तो हमें नहीं पता कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो वहाँ के जो लोगों का कॉपरेशन था हमको कभी फील ही नहीं हुआ। हम लोग मोस्टली कहते रहते हैं ना कि लड़कियाँ हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा कि हम लोग सेफ़ नहीं हैं क्योंकि बहुत जो हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, लोग हमारे लिए वेट करते होते थे। तो ये सब कोई मैसेज देना चाहेंगे बाकी सभी गर्ल्स? मैसेज तो अपना काम बहुत शिद्दत से कीजिए जो भी आप कर रहे हैं और दुनिया जैसा हम सोचेंगे वैसी बनेंगी। नो योर लिमिट्स एंड कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू। Can you please share your name and your record? Karishma Joshi. So what is your record? Square root of 5. I recall square root of 5, 1008 digits. So from where did you get the inspiration to do this record? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सुरेश सर उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाया था जी, उन्हीं ने गाइड किया था। तो कब से प्रिपेयर कर रहे हैं आप इस रिकॉर्ड के लिए? बिफोर 1 मंथ। 1 मंथ? हाँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चैलेंज आपको लगा कि इस रिकॉर्ड को बनाते समय? नहीं, वो तो फोकस, डेडिकेशन, उससे सब कवर हो गया था। कोई फ्यूचर प्लान्स आपको? हाँ, IAS का। IAS का। कोई मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को? बस फोकस, डेडिकेशन, उसी से सारा टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप प्लीज अपना नाम और अपना रिकॉर्ड प्लीज बताइए। अप्पासाहेब लक्ष्मण गायकवाड ॲट पोस्ट चितेगाव, तालुका पैठण, डिस्ट्रिक्ट संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आप अपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए। मैं 1 मिनट में 67 स्क्वाट 2013 के इंडिया रिकॉर्ड बुक में लगा चुका हूँ। अभी मैं लाइव डेमो करके वो 2013 का 67 का स्क्वाट का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। तो आपको ये रिकॉर्ड बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? ये रिकॉर्ड बनाने का इंस्पिरेशन मेरे पिताजी रेसलर थे, उन्होंने मुझे सिखाते थे और वो हर दिन सुबह जल्दी उठा के एक्सरसाइज करने के लिए लगाते थे। उस टाइम ऐसा कुछ इतना ये नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ कुछ, लेकिन जब मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज जब गए तब दोस्त लोग मिले और उन्होंने बोले आपका वर्ल्ड लेवल का स्टेमिना है, आप रिकॉर्ड वर्ल्ड लेवल का बना सकते। तो 2013 में आप से इंस्पिरेशन आ गया और वो रिकॉर्ड मैंने 1 मिनट का 67 का कर दिया 2013। अभी रिकॉर्ड बनाने के दौरान कुछ भी कठिनाई नहीं आई मैम। ऑलरेडी मैं 1 hour 49 minutes 32 seconds 4004
स्कॉट लगा चुका हूँ लिम्का बुक रिकॉर्ड में, और असिस्ट बुक रिकॉर्ड में भी मैंने 3 मिनट में 206 कर चुका हूँ, 206। और अभी इंडिया बुक से मुझे इतना प्रोत्साहन मिला कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और मैं वहाँ पे प्रोसेस में हूँ। और करण जी और सर जी ने मुझे ये रिकॉर्ड देख के 4004 का लिम्का बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड, यूनिकोड, असिस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड देख के फिल्म सिटी बुलाया था 2018 में, तो वहाँ पे मेरा परफॉर्म उन्होंने वर्ल्ड में बताया है। आप ही के कारण हुआ इंडिया बुक रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड मेरा इंडिया बुक रिकॉर्ड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने अपना समय दिया जी, थैंक यू मैम। Please share his name and his record. Sure. Well, my son name is Nitik Vashve and he's 7 years old, and we are from Hyderabad, and he's my younger son. I even have an elder son also. His name is Snehit Prakut. His record is he recited 1026 decimal digits of pi value. As we all know that there are many people who recite some the countries and capitals and identifying the flags and many aspects of general knowledge. I thought kind of bit different like that, as he has some good memory power. So I taught him how to recite the decimal digits of pi value. Like if you can people allow us to exhibit this little bit of decimal digits reciting, I'll be very happy for that. So shall I? Can we? He'll be reciting the decimal digits of pi value. Shall I? How many times? No, little bit. Just from okay. Papa, pi value. If someone can open the decimal digits of their mobile, it will be easy for them. Like he is saying right or wrong, they can identify it, right? You can do it. Okay then. Chup up. 3 4 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 9 7 8 8 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 8 2 7 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 90 9 90 7 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 0 8 9 9 6 2 8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 7 0 6 7 9 8 2 1. So he can recite more than 1000 digits decimal digits of pi value. Apart from that, he even I taught him countries and capitals, the muscles, the bones of the body, and identifying the flags. These are some of the skills which he has. If you can even allow me some other part, differently, he can recite even all the countries in the world. He'll be saying just the countries. Okay, start with that. Morocco in Africa, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, Chad, Niger, Mali, Mauritania, Western Sahara, Cape Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libya, Ivory Coast, Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso, Nigeria, Cameroon, Central African Republic, South Sudan, Ethiopia, Haiti. Yes, I'm done. Thanks for. Thank you so much for giving us your time. We wish you all the best for the future. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good, super.